गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ पुश इनटू द डीप सी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने वेट टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है मध्य से 6000 सबमर्सिबल की, जो कि 6 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस जो है वो जाने को केपेबल है अंडर वाटर मिनरल्स ऑफ द कोस्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो इंडिया इस समुद्रयान की जो जर्नी में है स्टेडीली फॉरवर्ड मूव कर रहा है ताकि वास्ट पोटेंशियल ऑफ द डीप ओशन को एक्सप्लोर कर सके। तो एक मैन सबमर्सिबल है, एक डीप सी सबमर्सिबल जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है मत्स्य 6000 समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंदर। 6 किलोमीटर्स ये बीनीथ द सरफेस जा सकती है, सी सरफेस, और डीप ओशन मिशन का ये ब्रॉडर डीप ओशन मिशन का ये पार्ट है। तो क्यों हमारे लिए डीप सी मैटर करता है इतना? तो यूएन क्लॉज जो है वो कंट्रीज़ को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है नेचुरल रिसोर्सेज का विद इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स लगभग 370 किलोमीटर कोस्ट लाइन से दूर तक जो है वो किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो मैसिव अनटैप्ड पोटेंशियल हमारे लिए होल्ड करता है सी बेड में और वाटर कॉलम में। तो क्या रीजंस हैं क्यों इंडिया इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है? मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए, ओशनोग्राफिक और क्लाइमेट डेटा के लिए, डिजिटल इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 95% जो ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक है वो अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू ही जाता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि स्ट्रेटजिक कंपटीशन है चाइना के साथ जैसे हमारा। ओके, तो चैलेंजेस क्या हैं इस डीप सी टेक्नोलॉजी में? जो एवरेज डेप्थ है इंडिया की ईईजी की वो लगभग 4000 या फिर ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के आसपास आप मान सकते हो, जो कि 4.5 टाइम्स है हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। प्रेशर जो होता है ऐसे डेप्थ पर वो लगभग 380 एटमोसफेयर्स का होता है। तो क्या टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं? जैसे कम्युनिकेशन अंडर वाटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी या एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी साउंड सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर एसेंशियल होते हैं। फिर प्रेशर रेजिस्टेंस भी होता है। अब आपने देखा होगा ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल ट्रेजेडी हुई थी 2023 में। वो एक रिमाइंडर है कि कितना मुश्किल है अगर बिना हम सेफ्टी या इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के ऐसे इतना डीप डाइव करें तो। फिर कॉस्ट और एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, स्पेशलाइज्ड रिसर्च चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो इंडिया को आगे और क्या करना चाहिए? तो डीप ओशन मिशन जो कि 2018 में लॉन्च किया था वो एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। अब आगे इंडिया को अपने लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट को बढ़ाकर मिनिस्ट्री ऑफ ओशन अफेयर्स बना देनी चाहिए, जिसमें कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हो और वो पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करें। फिर मिशन मोड में प्रोजेक्ट्स को आगे अप्रूव करना चाहिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रिसर्च लैब्स में इन्वेस्ट करो ताकि डीप ओशन साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रहे। प्राइवेट कंपनीज़ को भी इंसेंटिवाइज करो ताकि वो डीप सी माइनिंग में एंटर हो सके। एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए डिफाइंड माइलस्टोन्स के साथ। फिर डुअल यूज़ नेचर है हमारे डीप सी टेक्नोलॉजीज़ का, तो इसलिए इंडिया को सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट की तरह ही नहीं बल्कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी की तरह डीप ओशन मिशन को देखना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो म्यांमार के साथ एग्जिस्ट करती है उसको स्क्रैप किया जाएगा। तो एक्चुअली फरवरी 2024 में ही इसको अनाउंस कर दिया गया था कि ये फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर स्क्रैप कर दी जाएगी। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि फॉर्मर मणिपुर सीएम जो है उन्होंने ब्लेम किया था कि जो अनरेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है मणिपुर और म्यांमार के बीच में, वो ही एथनिक कन्फ्लिक्ट कॉज कर रही है मणिपुर में। मिज़ोरम और नागालैंड ने इस डिसीजन को अपोज किया था। तो ये फ्री मूवमेंट रजीम जो है 1968 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इनिशियली अलाउ करती थी ये कि 40 किलोमीटर तक इंडिया में, 40 किलोमीटर तक म्यांमार में जो हिल ट्राइब्स जो वहाँ पर रहती हैं वो आप आपस में आ जा सकती हैं। लेकिन उस डिस्टेंस को बाद में कम करके 16 किलोमीटर कर दिया गया 2004 में, और 2016 में एडिशनल रेगुलेशंस भी डाल दिए गए। तो ये एक तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है इंडिया और म्यांमार के बीच में, जो अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देता है विद इन 16 किलोमीटर्स आइदर साइड में इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे। तो कोई भी मेंबर ऑफ हिल ट्राइब्स जो है वो क्रॉस कर सकता है बॉर्डर को एक बॉर्डर पास के साथ, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है, और 2 हफ्ते तक वहाँ पर वो एक विज़िट कर सकता है।
तो ये इसलिए किया गया ताकि हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल टाइज जो हैं दोनों ट्रांस बॉर्डर कम्युनिटीज़ के बीच में वो मेंटेन रह सके, लोकल ट्रेड जो है वो बूस्ट हो। फिर यूनिक केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन है ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी। और 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो 2018 में ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो फ्री मूवमेंट रजीम है, इनफॉर्मली तो ये सेंचुरीज से चलती आ रही थी। अब ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ही से ही ये जो है इंस्पायर्ड भी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं USCIRF। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जाएं इंडिया की एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी रॉ के अगेंस्ट, क्योंकि वो सिख सेपरेटिस्ट को प्लॉट असैसिनेशंस को प्लॉट कर रही है। तो ये USCIRF क्या है? एक यूएस फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998 में क्रिएट किया गया था। ये रिव्यू करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स के इंटरनेशनली, और पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और कांग्रेस को। इसमें 9 कमिश्नर्स होते हैं, या तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या फिर कांग्रेशनल लीडर्स जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के, इसको अपॉइंट करते हैं। इनका वर्क जो है वो एक प्रोफेशनल नॉन पार्टिसन स्टाफ द्वारा सपोर्टेड होता है। USCIRF जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है यूएस गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पर्टिकुलर लॉ को। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं रिलीजियस फ्रीडम को मेजर करने के लिए ग्लोबली एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम एंड अगेन जो यूएस के एम्बेसडर हैं, जब जब ये रिपोर्ट आती है तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो इंडिया में कई बार देखा गया कि यूएस के एम्बेसडर एटलीस्ट इनफॉर्मली जो है इंडिया को ये कम्युनिकेट करते हैं कि इस रिपोर्ट को अवॉइड ही किया जाए, इसको एक फ्रिक्शन पॉइंट बनने ना दिया जाए इंडिया और यूएस के टाइज के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गाया स्पेस टेलीस्कोप। ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कंफर्म किया है कि गाया स्पेस जो है जो मिशन है या फिर गाया स्पेस जो स्पेसक्राफ्ट है वो पैसिवेट हो चुका है, मतलब अब इसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और इसको एक सेफ रिटायरमेंट ऑर्बिट में अराउंड द सन प्लेस किया जा चुका है। तो गाया मिशन क्या है? इसको जो है 2013 में लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, एक मोस्ट प्रिसाइज 3D मैप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी जो है बनाने के लिए एस्ट्रोमेट्री के थ्रू, मतलब पोजीशंस और मूवमेंट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ को मेजर करते हुए लैग्रांज पॉइंट 2 पे इसको प्लेस किया गया था 5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। और इसमें ट्विन टेलीस्कोप्स लगे हुए थे जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में से लाइट को कैप्चर करते थे। डिजिटल कैमरा इसमें लगभग 1 बिलियन पिक्सल्स का था जो कि लार्जेस्ट एवर नोन फ्लो इन स्पेस था। तो इसने क्या डिस्कवरीज की हैं ऐसी? फर्स्ट प्रिसाइज 3D मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इसने दिया, जो कि हमें हमारी गैलेक्सी की शेप को भी अंडरस्टैंड करने में इसने हेल्प किया। न्यू क्लास ऑफ ब्लैक होल्स इसने, जो कि हमारे को अदरवाइज इनविजिबल थे, वो इसने हमारे को डिस्कवर करके दिए। लगभग 1.5 लाख एस्टेरॉइड्स को आइडेंटिफाई किया है इसने। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेसाग एन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CAG ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग को लीवरेज करने के लिए। तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक बॉडी है या सोसाइटी है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है ऑफ कोर्स। गांधीनगर में लोकेटेड है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट करना जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के एरिया में ये इसका काम है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इसके 3 मेन डोमेन एरियाज़ हैं। और ये स्पेशलाइज सर्विसेज सॉल्यूशंस देती है इम्प्लीमेंट करने के लिए मैप बेस्ड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, और ये GIS सॉल्यूशंस कंप्लीट हमें प्रोवाइड करती है। तो ये इंस्टीट्यूट कई तरह से मिनिस्ट्रीज़ और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज़ के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता रहता है। तो एक तरह से नेशनल लेवल एजेंसी बन के सामने आया है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ में प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं नामीम्स और लाइट व्हीकल्स के लिए। नामीम्स क्या है? नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। डीआरडीओ ने बनाया है। प्रोडक्शन इसकी जो है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड कर रहा है। तो ये एक ट्रैक्ड वर्जन है नाग एंटी टैंक टैंक गाइडेड मिसाइल का, जो कि थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। लॉक कर लेता है जो अपने टारगेट को यूजिंग एन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लॉन्च से पहले। तो इसको डिज़ाइन किया गया है हैविली आर्मर्ड एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नाइट स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसमें। 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक की इसकी जो है वो रेंज है। और इसके और भी कुछ वर्जन्स हैं जो पहले लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे हेलिना, ठीक है। फिर ये रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने रिसेंटली एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट की है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज, जो हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट की जा रही है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ईस्टर्न सेक्टर जो है एलएसी का हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है जो अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ इसे डीपली कंडक्ट किया जा रहा है। इसको ईस्टर्न आर्मी कमांड जो है वो लीड कर रही है। आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और बाकी के कॉम्बैट एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं फ्यूचर वॉरफेयर को। अब इसकी शुरुआत ही इससे हुई है कि सारी जो ये तीनों सर्विसेज हैं इन्होंने अपने एडवांस सर्वेलेंस रिसोर्सेज इस एक्सरसाइज में लगाए हैं या डिप्लॉय किए हैं। ये एक्सरसाइज को आप कॉन्टिन्यूएशन मान सकते हो एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, जो नवंबर 2024 में कंडक्ट की गई थी। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's push into the deep sea. This topic is important for your science and tech section. So recently, India has completed the wet testing of Matsya 6000 submersible, which is capable of diving up to 6 kilometers below the surface to look for underwater minerals off the coast. So India is steadily moving forward in this journey to explore and harness the vast potential of the deep ocean. So this is a key step in the direction whereby the Matsya 6000, which is a deep submersible, the wet testing of this deep submersible has been done. So it has been developed by the National Institute of Ocean Technology under the Samudrayan project. So it is capable of diving up to 6 kilometers beneath the sea surface, and it is part of the broader deep ocean mission also, which aims to place India among a handful of countries which have human rated submersibles that are capable of operating at such extreme depths. It is not just about developing deep sea, it is not just about science, but it is about economic strength, digital infrastructure, national security, and global competition, especially with countries like China, which are far ahead in this field. So, what is the importance of deep sea matter? What is the importance of deep sea for India? So we all know that UN clause gives us or gives the countries exclusive rights over natural resources within their exclusive economic zones, which extend up to 200 nautical miles, that is about 370 kilometers from the coastline. And India's EEZ holds massive untapped potential on the seabed and in the water column. So why India needs to invest in this domain? First, of course, is uh, the seabed holds valuable resources like polymetallic nodules, gas hydrates, oil, other rare earth materials. India also needs to explore the fisheries and marine bioresources, which offer economic and nutritional benefits. Then, deep ocean exploration can also support our climate modeling, weather forecasting, and environmental research. Uh, about 95% of the global internet traffic passes through the undersea fiber optic cables. Therefore, ensuring that these cables are secure is crucial for our digital economy. Deep sea is also becoming a space of strategic competition with countries like China, which are far ahead in this domain. They have recently unveiled a cable cutting device capable of damaging critical undersea infrastructure. So, India must prepare itself with domain awareness, monitoring systems, and countermeasures. So, what are the challenges of deep sea technology? So, of course, the average depth in India's
exclusive economic zone is about 3741 meters, which is nearly 4.5 times the height of the Burj Khalifa. The pressure at such depths exceeds 380 atmospheres, which is requiring specially designed submersibles and materials. So, what are the key technological challenges here? Unlike air, sound in water is affected by temperature, pressure, and salinity. So, therefore, very low frequency and extremely low frequency sound systems are essential, but they are very expensive to develop. Then, the deeper you dive, the more robust the vessels need to be, like we saw during the Ocean Gate Titan submersible tragedy of 2023. So, building such technologies also demand large financial investments, specialized research, and highly skilled workforce. Okay, so areas where countries like China, US, India, and France, Japan, and France have made significant progress. So, what India needs to do next now? So, Deep Ocean Mission, which was launched in 2018, is a step in the right direction. Apart from that, India needs to upgrade its Department of Ocean Development into a full fledged Ministry of Ocean Affairs. We need to approve projects in mission mode with clear deadlines, adequate budgets, and transparent review mechanisms. We also need to invest in academic institutions and research labs which are focused on deep ocean science and technology, so as to encourage innovation and skill development. We also need to incentivize private companies to enter into deep sea mining, cable laying, salvage, and submersible development. So we also need to create a 10-year roadmap for with defined milestones across technology, governance, infrastructure, and security. Because the deep sea technologies are of dual use nature, it is essential to view India to it is essential for India to view this ocean development as not just a technical project but also a national strategic priority. So the next topic is free movement regime. This topic is important for your international relations. So Union Home Minister Amit Shah ji has announced that a free movement regime with Myanmar would be scrapped soon. So in February 2024, a similar announcement was made that this India-Myanmar border uh, free movement regime would be scrapped. So this decision was influenced by former Manipur CM, who blamed the unregulated cross-border movement for the fueling of ethnic conflict in Manipur. Of course, it was opposed by Mizoram and Nagaland, but still now, till now, no official notification or bilateral agreement has been made yet. So, free movement regime was introduced in 1968. It initially allowed for movement up to 40 kilometers, but later reduced to 16 kilometers in 2004, with additional regulations enforced in 2016. So, what is this FMR or free movement regime? It's a bilateral arrangement between India and Myanmar, which permits unrestricted movement within 16 kilometers on either side of the India Myanmar border. So any member of the hill tribes, whether an Indian citizen or a Myanmarese citizen, can cross the border with a border pass, which is valid for 1 year, and stay for up to 2 weeks per visit. The objective is to maintain historical, cultural, and social ties between the trans-border communities. It is also aimed to boost local trade and facilitate familial visits. It also serves as a unique case of cross-border cooperation under India's Act East policy. So it was formally introduced in 2018 and it was inspired by India's Act East policy. Of course, it has informally existed for centuries before. So the next topic is USCIRF. This topic is important for your international relations. So US Commission on International Religious Freedom has recently recommended targeted sanctions against India's external spy agency RNDW over alleged involvement in the assassination plots against six separatists. So what is USCIRF? It's a US federal government commission created by the International Religious Freedom Act of 1998, which reviews the facts and circumstances of violations of religious freedom internationally. So it has nine commissioners, which are appointed by either the president or congressional leaders of each political party. Their work is supported by a professional non-partisan staff. It also releases an annual report which assesses the US government's implementation of the International Religious Freedom Act. It uses the so-called international standards to monitor religious freedom violations globally. Just remember the fact that you may have heard in several uh, diplomats' interviews or even in columns
that the this USCIRF is basically a resort of non-electable politicians of the US. So what happens is that they get inspired from the uh, external agencies of other enemy countries of India, or for that matter for any other country. Then they release such reports. So that's why even the people in the US knows it. That's why time and again when these reports are released and it becomes a friction point between India and US relations, the US ambassadors have repeatedly conveyed informally to India that you need to avoid such reports and do not let them to become a point of friction between the ties of the two nations. So, anyways, the next topic is Gaia Space Telescope. This topic is important for your science and tech section. So, European Space Agency has confirmed that the Gaia Space Telescope or the spacecraft was passivated, that is drained of energy, and it has been put into a safe retirement orbit around the sun. So, what is Gaia mission? It was launched in 2013 by the European Space Agency to create the most precise 3D map of the Milky Way through astrometry, that is, measuring positions and movements of celestial bodies. It was placed in at the Lagrange point 2, that is 5 million kilometers from Earth. It captured light from different directions, the twin telescopes of this mission, and there was a digital camera which had about 1 billion pixels, the largest ever flown in space. So, what kind of discoveries was it able to make? So, it was able to make the first precise 3D map of the Milky Way galaxy, which also helped us to understand the shape of the galaxy. It also discovered new black holes, which were otherwise invisible. It also identified about 150,000 asteroids. It also tracked their orbits and potential threats to Earth. So the next topic is BISAG, and this topic is important for your science and tech section. So CAG has recently signed an agreement with the Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geoinformatics to leverage advanced technologies in geographic information system and remote sensing. So what is BISAG? It is an autonomous scientific society under the Societies Registration Act of 1860 under the Ministry of Electronics and Information Technology. So it is located in Gandhinagar, and it aims to undertake the technology development, management, research, and development in the area of geospatial technology. There are three main domain areas where it works. First is the satellite communication, then geoinformatics, and geospatial technology. So BISAG and provides specialized services and solutions in implementing map-based geographic information systems also. It also provides complete GIS solutions. It works in close coordination with ministries and state government departments, agencies, and therefore it has emerged as a national level agency to use satellite communication and space and geospatial technologies for the planning and development activities in various sectors of the government. So the next topic is NAG anti-tank guided missile system. This topic is important for your security section. So Defense Ministry has signed 2500 crore worth contracts for NAG anti-tank guided missile systems and light vehicles. So NAG anti-tank guided missile systems has been developed by DRDO, but it is being produced by Bharat Dynamics Limited. So it's a tracked version of the NAG anti-tank guided missiles, and it's a third generation fire and forget missile, which locks itself onto targets using an imaging infrared seeker before the launch. It is designed to destroy heavily armored enemy tanks. It also has night strike capability. Its range is about 500 meters to 4 kilometers. The previous version of this NAG ATGM was launched as Harina, which was successfully tested in 2018. It was developed for the Rudra and light combat helicopters. Okay. So the next topic is exercise Prachand Prahar. This topic is again important for your security section. So Indian Armed Forces have recently conducted a multi-domain exercise called Prachand Prahar in Arunachal Pradesh. So it's a tri-service multi-domain warfare exercise conducted in the high altitude terrain of Arunachal Pradesh. It was conducted deep in the high altitude terrain of Arunachal Pradesh, which is the eastern sector of the LAC. It was carried out under the aegis of Eastern Army Command. The exercise involved the Army, IAF, and other combat elements in a synergized combat drill designed to simulate future warfare.
It commenced with the deployment of advanced surveillance resources of all three services, and this exercise is in continuation with exercise Purvi Prahar, which was held in November 2024. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.